Okay, so the topic is actually alkene. In today's class, we are going to start alkene. This is the second hydrocarbon that we need to discuss, and we know few things. We know few things already, that hydrocarbons are actually the compounds containing carbon and hydrogens only, right? Compounds containing carbon and hydrogen only. And we have two types of hydrocarbons. We know that one is alkane. We already discussed in the last classes. And the second one that we are going to start is alkene. We also want more type of hydrocarbon, which is known as alkyne, and it is not in our syllabus, right? Alkyne, which is not in our syllabus. They can ask this in the exam, but definitely they will give you everything over there about this in the question. Why alkanes are different thing? Because alkanes have only carbon-carbon single bonds. And what is alkene? This is actually the compounds, hydrocarbons that contain carbon-carbon double bond, right? Carbon-carbon double bond, and alkyne is something which is having carbon-carbon triple bond, right? They both are unsaturated. They both are unsaturated. Alkane and alkene both are alkene and alkyne both are unsaturated, and alkane is saturated. Why they are saturated? Because carbon-carbon single bond is over there. Carbon is already forming 4 bonds over there. Now it's difficult to make more bonds over there, because कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें आपके पास 5 बॉन्ड्स मौजूद हैं, एंड 5 bonds are weaker bonds, so it can react very easily with the other substances. So you need to keep remember, alkenes and alkynes are unsaturated. They have capability to react more, right, Bacho? So we know that general formula of alkane was CnH2n plus 2. The maximum capability of carbon to form bonds is this. अगर आपसे कोई पूछे कार्बन का हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनेगा तो मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन वहां लग सकते हैं, तो मैक्सिमम ये हाइड्रोजन लग सकते हैं H2n plus 2, ठीक है ना, मैक्सिमम हाइड्रोजन. फॉर एग्जांपल आपके पास 18 कार्बन है, राइट? सो इन 18 कार्बन में मैक्सिमम जो आपके पास हाइड्रोजन लग सकते हैं वो कितने लग सकते हैं? आपके पास 218 36 प्लस 2 38 हाइड्रोजन से ज्यादा हाइड्रोजन नहीं लग सकते, ठीक है ना. 38 हाइड्रोजन लग सकते हैं मैक्सिमम. और अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा एलिमेंट भी लगाते हो तो सम ऑफ दीज टू एलिमेंट्स विल बी, अगर वो एलिमेंट सिंगल बॉन्ड बना है तो 38 ही होगा. फॉर सपोज अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो अगर 8 हाइड्रोजन को 8 क्लोरीन डिस्प्लेस करें तो द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस. तो टोटल अभी भी आपके पास 38 ही बन रहे हैं अगर एलिमेंट सिंगल बॉन्ड बना रहा है. अगर फ्लोरीन है तो अगर आपके फ्लोरीन जो है 10 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है तब भी यही बनेगा आपके पास, ठीक है ना. दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट class, and we do some past papers of this as well. This type of past papers are not included, but I am telling you for your quick answers in MCQs. Right? Then carbon carbon double bond की जो maximum capability है बच्चों, it is the double hydrogen. अगर आप कार्बन को देखते हो तो उसके हाइड्रोजन डबल होंगे. अल्केन्स में डबल से 2 ज्यादा होते हैं, ठीक है ना. अल्केन्स में डबल से 2 ज्यादा होते हैं, और जबकि अल्कीन में पूरे डबल होते हैं, फिक्स डबल. फॉर सपोज अगर आपके पास फॉर सपोज 20 कार्बन है, इफ यू हैव 20 कार्बन तो इसके डबल आपके पास हाइड्रोजन होंगे. इट मींस यू हैव 40 हाइड्रोजन ओवर देयर अगर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. इफ दिस इज ओनली फॉर व्हेन यू हैव only one carbon carbon double bond, only one. अगर कोई से भी दो कार्बन के दरमियान एक बार सब डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसके बाद कैपेसिटी ये होगी. अगर फॉर सपोज अगर आपके पास डबल बॉन्ड बढ़ते जाएंगे तो हर एडिशनल डबल बॉन्ड की वजह से 2-2 हाइड्रोजन कम होते जाएंगे. हर एक एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से आपके पास 2-2 हाइड्रोजन कम होते जाएंगे. फॉर सपोज if you just focus on 4 carbons, so 1 2 3 4, if we have double bond over here, तो बच्चों देखो इसकी कैपेसिटी मैंने पूरी की 4 बॉन्ड्स की, इसकी पूरी की, इसकी पूरी की, इनकी पूरी की, इन सबके 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए. नाउ द फॉर्मूला इज C4H8, ठीक है ना. अगर फॉर सपोज इसमें सिंगल बॉन्ड होता तो फिर यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी इस तरह की होती, यू मैक्सिमम हैज C4H10. अब अगर इसमें 2 डबल बॉन्ड लगा दूं, फॉर सपोज एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, तो देखें यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, आपके पास अब मैक्सिमम जो कैपेसिटी रह गई है वो हो गई C4H6. 2 और हाइड्रोजन कम हो गए. तो जब एक भी डबल बॉन्ड नहीं था
तो मैक्सिमम कैपेसिटी थी 4 कार्बन की कि वो 10 हाइड्रोजन अपने साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आपने एक पाई बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन कम हो गए, एक और पाई बॉन्ड बनाया आपने तो 2 और हाइड्रोजन कम हो गए। तो यू नीड टू कीप रिमेंबर बाय एडिशन एवरी डबल बॉन्ड, by the adding one more double bond in the chain, it is actually decreasing 2 hydrogens, because डबल बॉन्ड बनता है 2 एलिमेंट्स के दरमियान, 2 कार्बन कार्बन के दरमियान बनेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्डिंग में, तो इस वजह से 2 हाइड्रोजन आपके पास कम हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। So this is the case that you need to keep remember, और इससे ज्यादा कोई मुश्किल चीज यहाँ पर आ नहीं सकती। ये चीज है ये इंसान भूल जाता है, तो इस तरह की चीज आपके पास आ सकती है। वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट राइट नाउ इफ वी हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ओनली वंस in a molecule. So the general formula जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, it is only man just have one carbon carbon double bond in the whole molecule, right? And then after this, if you continue this, तो आप इसको जब और कंटिन्यू करते हैं तो मजीद करने के लिए you need to keep remember कि आपके पास और जो चीजें हैं इसमें याद रखनी वो ये है कि फॉर सपोज आपके पास अल्केन और अल्कीन मौजूद है, फॉर सपोज आपके पास अल्केन और अल्कीन दोनों मौजूद हैं, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज अल्केन एंड व्हिच वन इज अल्कीन इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीस टू। अगर आप इनमें से आइडिया करना चाहते हैं कौन सा अल्केन है कौन सा अल्कीन है, so you can use bromine test for the checking. Bromine test can be used to identify which one is alkane and which one is alkene, because you can see this whenever you have carbon carbon double bond, so there is a possibility of reaction. यहाँ एडिशन रिएक्शन हो सकता है ब्रोमीन के साथ, तो जब ब्रोमीन आप इसमें ऐड करेंगे और जब आप ब्रोमीन इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन होगा एंड द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डीक्लोराइज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का डीक्लोराइज हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी है होने की, और वो पॉसिबिलिटी आप बच्चों को पता है, आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर चुके हो पिछली क्लासेस में अल्केन का, सो वी नो दैट अगर यूवी लाइट होगी देन दिस रिएक्शन कैन हैपन, राइट? अब लेबोरेटरी के अंदर अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो लेबोरेटरी के अंदर रिएक्शन करते हैं सूरज की रोशनी तो है नहीं, हम तो अंडर द रूफ काम कर रहे हैं, तो सूरज की रोशनी नहीं होगी तो ये टेस्ट का रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप धूप में खड़े होकर ये प्रोसेस करेंगे तो मे बी यू विल सी दैट कि ये भी ब्रोमीन को डीक्लोराइज करेगा, बट द डिफरेंस इज कि ये करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, तो आपके पास HCl भी बनेगा, आपके पास HCl भी फॉर्म होगा या HBr भी फॉर्म होगा। यहाँ पर हम ब्रोमीन ले रहे हैं तो सॉरी HBr बनेगा, राइट? और यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा तो देयर इज द ओनली प्रोडक्ट कि आपके पास ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और कोई प्रोडक्ट नहीं होगा। तो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई कि आपके पास अल्केन कौन सा है अल्कीन कौन सा है। हम दोनों में से ब्रोमीन पास कराएं, जिसमें रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का डिसअपियर हो जाएगा, दैट विल बी ब्रोमीन, राइट? और ये रिएक्शन हमने कराना ऐसी जगह है जहां पर यूवी लाइट मौजूद ना हो, या एटलीस्ट उतना टेम्परेचर मौजूद ना हो जो कि यूवी लाइट से मिलता है रिएक्शन के। Is that clear? Yes sir. So should I need to start the main thing of this alkenes? So let's move towards alkene. So alkenes की अगर आप बात करोगे बच्चों तो alkenes में हमें और क्या चीज पता होनी चाहिए। alkenes में now we need to know about the molecular formula, condense formula, skeletal formula, display formula, everything over there. So bachcho, you need to keep remember if you are applying journal formula for alkenes, so it must start with 2 carbons. एक कार्बन से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि being unsaturated compound there should be carbon carbon double bond, तो जब 2 कार्बन ही नहीं होंगे तो डबल बॉन्ड कहाँ से आएगा? So we need to remember this कि हमें इसको स्टार्ट करना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। तो for suppose if we have 2 carbons, so what will be the molecular formula of the compound? If you have 2 carbons, so bachcho, what will be the molecular formula? We will have CN, means we have 2 carbons, and 2 to the 4 we have 4 hydrogens, right? Right bachcho? If you talk about 3 carbons, so it will be C3H6. If you talk about 4 carbons, so it will be C4H8. So these will be the molecular formula which are telling us the exact
number of each element over there. Now, displayed formula. If you talk about displayed formula, so bacho, in this type of formula, you need to show every single bond present in the compound. So over here we have two carbons. So we just draw two carbons, and we know that we are talking about alkenes. So in alkenes, there must be carbon-carbon double bond. So I draw the carbon-carbon double bond. Now both the carbons have two bonds already. Now they want to form two more bonds, and now every carbon bonded with two more hydrogens. So this will be the displayed formula of this molecule. Now, if you talk about three carbons, so 1, 2, 3 carbons, and you can make double bond between any two carbons. So I am drawing over here. Now the first carbon on the right hand side have two bonds, so 3, 4 bonds. Now the carbon in the center have 3 bonds already, so it will be the fourth bond. And the carbon on the left hand side have only 1 bond, so there should be 3 hydrogens to complete the 4 bonds of each carbon. Now, if you talk about 4 carbons, so it will be 1, 2, 3, 4. You can draw bond anywhere. If you draw on the left hand side, on the right hand side, both are the same things. Wherever you want to draw the bond, you can, and you need to start the numbering from there as well. So this carbon has 2 bonds already, so these are 4 bonds. Now the center one has 3 bonds, so this will be the fourth bond. This one has only 2 bonds, so this will be the third and fourth bond. This one has only 1 bond, so it will be 2, 3, and 4 bonds. Now you can even draw this in the center as well. So 1, 2, 3, 4. So if you draw the double bond over here, so this carbon should be having 3 hydrogens. This will be having 1. This will be having 1. This will be having 3. So both are 4 carbon alkenes. So these are displayed formulae, right? If you talk about condensed formula, this will be the formula type of formula in which you need to show the number of hydrogens attached with a single carbon. So you can see this in this one over here, each carbon having 2 hydrogens, and over here as well, each carbon having 2 hydrogens. So you can write like this: carbon, 2 hydrogens, double bond, carbon, 2 hydrogens. Even you can write this without double bond as well, so it will be CH2, CH2, right? And if you talk about this one, so first carbon having 3 hydrogens, second one having 1, and the third one having 2, right? You can even write like this: CH3, CH, CH2. So you need to remember this K, yahan par double bond hoga, right? Then it will be CH3, CH2, CH, double bond, CH2, and it will be like CH3, CH, double bond, CH, CH3, right? So they both are 4 carbon alkenes. Now, one more type of formula is this, bacho, skeletal formula, and this is the one which is new for you, and maybe it will be a problematic for you, but you need to remember over here that we just need to show carbons right now because these are hydrocarbons. So carbon to hydrogen bond is not going to show in this type of family because we just need to show carbons over here. So for example, if you talk about there, so we have 2 carbons, 1, 2, and these 2 carbon having double bond, so you need to show the double bond as well. So this will be the double bond. If you talk about the second molecule, so it will have 3 carbons, 1, 2, and 3, and over here we have double bond. If you talk about this one, so this will be 1, 2, 3, 4, and here we have double bond, right? You can even draw it like this: 1, 2, 3, 4, and because the double bond is on the first carbon, so you can even draw on the left hand side. This is the same thing, right? And if you talk about like this one, so it is having 4 carbons again: 1, 2, 3, and 4, and over here the double bond is in the center. Is that clear, Bacho? Yes. And then we have one more thing to know is name. Whenever you are going to name any organic compound, so there should be a prefix and suffix. So the prefixes are same. We talked about that in the last class of alkanes as well. जब हम alkanes का ये draw कर रहे थे, the prefixes are same. For 2 carbons, you need to keep remember it is known as eth. For 3 carbon, it is always remember as prop, and for the 4 carbons, it should be but.
And right now we are talking about alkene family. Right now we are talking about alkene family. So the suffix will be the last three words of this family, which is E and E. So it will be, bacho, it will be what? It is ethene, it will be propene, and this will be butene. Is that clear, bacho? Yes, sir. Now, one more thing to remember over here is you can see this, that the double bond is on the first carbon over here. So you can write the name of this as but1ene. This is but1ene because the double bond is on the first carbon. And over here, you can see this, the double bond is on the second carbon. Even you are counting from anywhere on the left-hand side or the right-hand side, double bond is on the second carbon. So you can say that but2ene. Am I clear, every one of you? Yes, sir. If you talk about the skeletal formula, so this is shown over here. If you talk about one more type of formula, which is known as empirical formula. But your empirical formula is what? It is the simplest ratio between the atoms of the elements present in the formula. So you can see this in every of the compound of alkene, there is always the same empirical formula, which is actually CH2. The both of them can be divided by the 2, and both of them divided by the 3, both of them can be divided by the 4. So the empirical formula for all of them will remain same, right, bacho? And this is actually the journal formula. So all type of formula, it is actually shown in this picture, or you can say that shown in right now over here on the screen. So you need to keep remember what is journal, what is molecular, what is displayed, what is condensed, what is a skeletal, and what is empirical. So you need to keep remember all these type of formulas, right? So just write it down in your copy. And for you, I just want, bacho, okay, you need to show me the working of pentene and hexene. Also, when you are drawing the condensed formula, molecular formula, and skeletal formula, you need to show every possibility where you can fit the double bond, the possibility of the you can say that the double bond कहाँ कहाँ आ सकता है. For suppose मैंने अगर आप देखें ब्यूटीन में बनाया है तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे आ सकता था या तो सेकंड कार्बन पे आ सकता था. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं. अगर आप लास्ट वाले पे लगाते हैं तो वी नो दैट नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वेयर द डबल बॉन्ड और एनी ब्रांच और एनी फंक्शनल ग्रुप इज नियर. सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी लगाता तो फिर भी ये फर्स्ट ही कहलाता. तो दे विल बी द सेम थिंग्स. सो आपको भी यही करना है. यू नीड टू ड्रॉ द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ द स्ट्रक्चर. जल्दी से मुझे पेंटीन और हेक्सीन का करके दिखाएं. जस्ट यू नीड टू सेंड मी द पिक्चर्स ऑन माय व्हाट्सएप सो आई कैन चेक. वेरी गुड. यू कैन सी दिस बच्चों के आपके पास यहाँ पर बैलेंसिंग का ये सीन है, ठीक है ना. और जर्नल इक्वेशन, यू कैन यूज दिस जर्नल इक्वेशन ओवर हियर बिकॉज this is the journal equation for hydrocarbons, and alkenes is also alkenes are also hydrocarbons, so the journal equation is also going to be applicable over here, right? And for because there is a disruption in the class, so I'm just going to show you two more equations for the balancing over here. For suppose we have C4H8, which is butene, and C5H10, which is pentene. When we burn them, definitely the reaction will be the oxygen with oxygen, and we know that the possible compounds are carbon with oxygen, carbon dioxide, hydrogen with oxygen will be water. So these are the two stable and well compounds of hydrogen and carbon with oxygen. And if we talk about balancing, the carbon is the first thing which is going to be balanced. Right over here we have 4 carbons, so the 4 carbon dioxide, 5 carbons, so the 5 carbon dioxide. Then the second thing will be hydrogen to be balanced, right? So the 8 hydrogens, so this will be the 4 water molecules, 10 hydrogens, so it will be the 5 water molecules. Then the last thing will be the oxygen. So you can see this 4 2s are 8, 4 1s are 4. So this, you can say that you have total 12 oxygens. So the half of this will be 6 oxygen, right? So over here it is 5 to the 10, and this 5 on the 5 will give you 15 oxygen. So the half of this will be 15 over 2 oxygen. Is that clear, every one of you? Yes, sir. Chale. Now it is your turn. You need to show me some equations, equation skills. So this will be equation skills for you. So just show me your skills. Now I just want you guys to write the combustion equations for hexane, heptene, and octene. Just do it quick, bacho,
and send me the picture so I can check you are getting the thing or not. So if we talk about incomplete combustion, bacho, so incomplete combustion is something you can say that you are combusting in the presence of less oxygen. You have oxygen, but it is in limited quantity. So it is just like that. For example, if you talk about the incident that happened previously in Murray, if you remember, there will be a snowfall almost 4 to 5 feet over there in Murray, and many of the peoples are, if you remember, were died over there just because they just slept whole night in the car and by just closing the windows, right? If you just close the window and you just go to sleep over there in the car, so the car is actually very limited. The area is very, you can say that, small, right? And we have almost 3 to 4 or 5 people's sitting in the car, and they are having respiration process, right? So when you are getting respiration process, definitely the oxygen is going to be utilized over there. So oxygen is going to utilizing over there, and the amount of oxygen is going to be consumed, and 5 of the peoples are having your respiration in the car by closing the window. So there is no inlet of oxygen in the car, and we are just utilizing oxygen within a car. So all the oxygen is going to be used up, right? And we are producing carbon monoxide in the car. So the peoples that were sitting in the car, they just slept overnight over there, and during their sleeping, they just inhale all the oxygen over there, and after the consumption of too much oxygen over there, the level of oxygen is going to be decreased, and in fact carbon monoxide is going to be produced over there. Once carbon monoxide is going to be generated in the vicinity where you are having, so it is a very toxic gas. It can kill you on the spot, right? So the carbon monoxide inhaled by the peoples inside the car, once it moves towards the blood, so it will form, you can say that, carboxyhemoglobin within a body, and the circulation of oxygen throughout the body will be, you can say that, it is just, you can say that oxygen bilkul khatam ho gayi hogi. This is just completely, and the circulation of oxygen and the provision of, you can say, the oxygen in the body is going to be end up. So it is going to be harmful for you, and you are going to be die, right? So all people are going to be die over there due to the inhaling of carbon monoxide. Carbon monoxide is very dangerous gas. That is why everyone in their houses and their homes, they just use open kitchens, right? We always have something in kitchen which is utilized over there to, you can say that, to send the gases outside the area, or we want the maximum oxygen from the outside area come inside. So we always use open kitchens, right? In every one of your houses, you will find open kitchens. We never use doors in the kitchen. We never use closed atmosphere in the kitchen. Just because of this, we want the complete combustion. In fact, carbon dioxide is also dangerous. It is also global warming causing gas, greenhouse gas. But it in fact, you can say it in fact be dangerous for you after few years, right? For suppose if you are having carbon dioxide, which is forming a layer around us, around our earth, right? It is absorbing what ultraviolet rays of sun. It is, you can say that, it is providing heat, extra heat to the world. It is causing global warming, right? But it is all about 10 years after, right? So after every 10 years, there is an increment in the temperature, which is 2 degrees centigrade. So this is harmful, but आपको पता है हम लोग हमेशा हार्मफुल उसको समझते हैं जो कि सडन हार्मफुल होता है हमारे लिए ना. तो जो चीज हमें 10 साल बाद नुकसान पहुंचा रही है, हम उसको हार्मफुल नहीं समझेंगे. इसी वजह से हम सिगरेट पीते हैं. बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं. क्यों पीते हैं? उनको पता है यार सिगरेट पी रहे हैं तो अभी ऑन द स्पॉट तो नहीं मर जाएंगे ना, मतलब मरेंगे, टाइम से मरेंगे, थोड़े दिनों बाद मर जाएंगे. दैट्स फाइन. थोड़े दिनों बाद अगर कोई चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है तो हम उसको नुकसानदेह नहीं समझते. सेम एज इट इज, कार्बन डाइऑक्साइड इज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड. इट इज अ ग्रीन हाउस गैस. ये सबको नुकसान पहुंचाती है, लेकिन 10 साल बाद पहुंचाती है. तो हमारे आने वाले जो लोग होंगे उनके लिए वो नुकसानदेह होगी. बट खैर है ना, हम तो गुजार रहे हैं ना जिंदगी. कार्बन मोनोऑक्साइड नुकसानदेह, तो उससे हम बचाव कर लेते हैं, ठीक है ना. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज, यू कैन से दैट, इट इज अ सडन problem. This is actually the problem which is on the spot. So it can even kill you. It can cause breathing difficulties. It can cause suffocation. It can cause lung diseases.
lung cancers, a lot of problems of carbon monoxide if you are having continuous inhaling of carbon monoxide, so it can kill you on the spot as well. So actually incomplete combustion tends to produce carbon monoxide in the atmosphere. That is why we always use open areas for the burning, right? So the conclusion is, for example, if you are burning any of the hydrocarbon in the presence of oxygen, and if the oxygen is limited, so it will produce what? Carbon monoxide rather than carbon dioxide, right, Bacho? Yes. So we have 8 carbons, so you can write 8 over here. We have 16 hydrogens, so we can write 8 over here. 8 and 8, it will be 16, so it will be 8 oxygen. You can see in the last equation, Bacho, you did over here with the excess oxygen, so it will be using like 8 carbon dioxides and 8 water molecules. So here we have almost 12 oxygen molecules. So you can see this over here. If you talk about 12 molecules of oxygen, so these are 4x additional molecules, है ना? तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगी तो एक्स्ट्रा यूज होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, लिमिटेड होगी, क्लोज एरिया में, बंद कमरे में, बंद घर के अंदर जनरेटर चलाएंगे, सो इट विल कॉज कार्बन मोनोऑक्साइड टू जनरेट, राइट? तो ओपन एरिया में इसी वजह से हम लोग घर के बाहर रखते हैं जनरेटर, या छत पे रखते हैं, या किसी ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर हवा का आना जाना हो, ताकि जनरेटर में जो कंबशन हो रही है, इट विल नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड. इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes. अच्छा देखें, इनकम्प्लीट कंबशन इतनी भी इनकम्प्लीट हो सकती है कि हो सकता है आपके पास कार्बन पैदा हो जाए, ठीक है ना? सो फॉर सपोज आपके पास और बहुत बहुत कम ऑक्सीजन है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कार्बन जनरेट हो जाए, तो सॉलिड कार्बन भी बन सकता है. तो इसके लिए वो आपको ऑप्शन देंगे, write equation for the incomplete combustion when solid is going to be formed. Then solid is going to be formed, you need to keep remember कि कार्बन बन सकता है. So when you are going to balance this to 8 carbons, 8 water molecules, it will be 4 oxygen. So you can see this, अगर और ऑक्सीजन कम होगी तो there is a possibility कि आपके पास क्या हो जाए, कार्बन भी जनरेट हो जाए. इस वजह से ही आप देखेंगे कि जहां गाड़ियों के इंजन में फॉर सपोज बर्निंग हो रही होती है, वहां पर ब्लैक चारकोल टाइप का जो है आपके पास एक सॉलिड जो है डिपॉजिट हो जाता है, और वो कार्बन होता है, क्योंकि आप गाड़ी का इंजन बहुत छोटा होता है, उसके अंदर फ्यूल कंबस्शन होती है, तो वहां पॉसिबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन कम है और कार्बन जनरेट हो जाता है. इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. इसीलिए हम गाड़ियों के इंजन के बाहर एग्जॉस्ट के बाहर लगाते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर. Catalytic converter, it will be as like this. It is one of the substance like this, right? यहाँ पर हम लगाते हैं एक, फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार इंजन है, ठीक है ना? कार इंजन के अंदर आपके पास गैसेस बर्न हो रही हैं, ठीक है ना? फॉर सपोज आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट हो गई, या फॉर सपोज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जनरेट हो गई, या फॉर सपोज आपके पास कोई जो आपका ऑक्टेन फ्यूल था वो कंप्लीटली कंबस्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कैटालिस्ट व्हिच इज नोन एज प्लैटिनम और रोडियम. इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. तो ये क्या करते हैं बच्चों, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करवा देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस बन जाती है. अगेन carbon dioxide is again the dangerous one, but it is comparatively less than dangerous, or it will take time to affect you guys or in the world. So that is why वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है अगर सिम, so it will oxidize it further and convert it into carbon dioxide. And for suppose आपके पास कोई unburned हाइड्रोकार्बन है वहां पर, जैसे कि ऑक्टेन, तो इसको वो completely combust कर it will convert this into carbon dioxide and water molecules. So these are the reactions that are happening in catalytic converter. अगर आपके पास for suppose car engine में कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई है by the incomplete combustion, so you can remove this by the reaction of with oxygen, वो उसको फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है. और अगर खुदा ना खास्ता ड्यू टू द स्पार्कलिंग इन द इंजन, द टेम्परेचर इज वेरी हाई ऑफ द स्पार्कलिंग, वहां एयर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, अगर नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ देता है वो, और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ही बन जाती है अंदर, सो इट मींस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बहुत डेंजरस है, एसिडिक गैस है, एसिड रेन कॉज कर सकती है, फोटोकेमिकल स्मोक कॉज कर सकती है बाहर आकर.
तो उसको खत्म करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराकर नाइट्रोजन गैस बना देता है, which is the 78% part of our atmosphere right now, और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और अगर कोई अनबर्न हाइड्रोकार्बन रह जाता है अंदर, पेट्रोल रह जाता है अगर अंदर, तो वो भी फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करता है, तो उसको भी वो कंप्लीट कंबस्ट कर बाहर निकालता है। इज दैट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. So this is Yes, actually sir. complete and incomplete combustion for you, बच्चों।